Hello everyone and welcome to Vimoh Live. This is a podcast that happens on Wednesdays at 9:30 p.m. and Saturdays at 9:30 p.m. We record this on we do this on YouTube, but it's also live on Twitch, and later on an audio version of it becomes available on uh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Ghana.com, JioSaavn, etc. And I will put my ticker on every time I forget to do this. Yeah. So, before I begin, I'll just remind everyone that the channel is monetized. If you want to support the show, you can do so by clicking the join button below, and you can then become a paying member of the channel. I'm an independent creator. This kind of work is all I do. It's my full time job now. And whatever you pay goes into helping me buy books, buy software, and paying my bills. So thanks in advance. You can also send super chats in the chat right now or throughout the show. Or if you're watching this at a later point of time, you can click the thanks button at the bottom of this video and make a one time donation of your choice. There are also other ways of paying which are on screen. On Patreon, we are patreon.com/Vimo, and on Stack, which is my blog, vimo.stck.me, there is a support button that you can click in order to make a payment. There is also merch available at kadakmerch.com/Vimo Live. That's KADAKMERCH, kadakmerch.com/Vimo Live. There are t-shirts, hoodies, and mugs available there. If you want to, you can buy them, and that money also helps me buy books, buy software, and pay my bills. This channel is devoted to talking about Indian contemporary culture, but our focus for the most part ends up being religion or atheism. That's why it's now called the Atheism Hour. We are in the month of December now. This is today is December 3 and a Saturday. This month, I don't know if I want to announce stuff right now, but in the coming year, there are going to be more content formats on this channel. Vimo Live will continue as it is, but but perhaps there may be members only live streams. I've talked about this before, and plans are going to be detailed further, and we shall get to them when we do get to them. And I will announce as and when that happens. There is a link pinned to the live chat on top. Three people have already clicked it. They're on screen with me. I'll bring them on momentarily. But if you want to talk to me on screen, like face to face, you can click on it. If you want, you can keep your webcam off. In fact, I would recommend that you keep your webcam off unless you really don't worry about anything, and you can keep your webcam on. So, without much further ado, let me take the first person is Amber. Hi, Amber. Hey, Mo, how are you doing? Hey, go on. I can hear you. Yeah, Vimoh. So actually, I not recently, 2, 3 months back, I came across your channel, your Science is Drop, Pranav channel, and Okay. Arpit channels. Hmm. Okay. So, so actually, it has all these channels, like including your channels, have impacted me, has made a generational, like I have shifted my views a lot because of your Hmm. content, and I also Okay. read about That's good to things. know. I hope Yeah. we shifted So it in the right direction, because sometimes yeah, what yeah, happens yeah, is yeah. that. Okay, Yeah, go yeah. on. So now I feel gutted about my views about the pseudoscience practices like Ayurveda and all those things because I used not used to believe in them. I was again like influenced by the influencers who was propagating that stuff without any scientific backing. Okay. So that's there. I want to thank you for that. You're This most is the welcome. first thing. The second thing I want to ask you that what are your ideological leanings politically? Like how you identify yourself? Are you a Marxist or you a liberal or or you are not a right winger for sure. So No, I used to be though. If you want to know more about it, you can watch episode number 55 yeah, on I this know channel. that. I know that, Right? and I used to be a right winger too. Yeah. So I think the best thing I would describe myself as right now is socialist. you are a socialist, right? Yeah. You are not a liberal, okay? Not liberals like No, no, I don't Khadat think and so. Rajiv Sardesai's No, no, I type of don't think people, so. right? I, I, Yeah. I think before I was a right winger, I was a liberal. But after Okay. coming out of the right wing black hole and being educated by so many young people on the things that matter, I Hmm. don't think I can ever go back to being a liberal. Leftist कुछ लोग बोल देते हैं मैं चला लेता हूँ काम, but if I have to ever say something, I say I'm a socialist. Okay. So I think we both have treaded the same path. Before being a Hmm. rightist, I was a liberal.
Yeah. Then I It's a thought, very clueless position, like, yeah, it's very, happy go yeah. lucky clueless position, and And the second thing uh, is you our can eyes spot remain a, closed to a lot of problems that, like, liberals are guilty of the same things as the right wingers. yeah, exactly. And secondly, Yeah. the thing is you can spot a right winger and they know they are bashed by left wingers like anything, right? But the problem with the Mm. liberals are that they remain like they remain. Nobody calls them out, right? Especially Yeah. in India, No, no, nobody these calls them days out, it has and started these days, and it has started these days. most Yeah. of it is coming from Dalit Bahujan Adivasi quarters, feminist Yeah, quarters. yeah. But So still, that is I think happening. because I am sure that once this right wing goes out of power, now liberals will occupy the power, which is not going Yeah, to that's solve the true. problems of the poor and Yeah. marginal people because they were, Which is why they are going to be need to be called out on multiple yeah, they things. need to be called out as fiercely as people are calling out right wingers. So obviously, right wingers are a bigger problem because, but I think Well, I they should, suppose individual call out cases would depend on whatever we are calling them out on. But yeah. when, like, you know, saying that they need to be criticized as strongly as right wingers, I don't know what that means in the present context, because I cannot imagine anyone needing to be called out more than the right wingers right now. Yeah, exactly. That is But yeah, true. when the Yeah, this is. times change, we are going to have a different context. Yeah, we are going because I remember back in 2010 and 11, the people Hmm. likes of Bakha Dutt and Rajdeep Sardesai, they have I used to admire them and all, but now Hmm. when I see these people, obviously right wingers are way above them. Okay, Yeah. let's keep this aside. But Hmm. now when I see them, they are just not. I think they are not communal. That's it. That is the only difference between a right winger and Yeah, them yeah, yeah. people. So as far as liberals Yeah, are concerned, the great big filter for them tends to be they are not communalism, com. and Yeah, that is it's a, not sufficient, right? Yeah. yeah, because They they need to be never evaluated on other fronts like caste and like cast for and some. because they're So I was like in the middle of a discussion with a bunch of people on Clubhouse, and we came to mm, the conclusion that some years ago, for me, uh, in fact, many of them, the great filter would have been position on Kashmir, but I yeah, think the position on better Kashmir. filter is position on caste. Yeah, position on caste and the second and the position on corporate tax cuts that the government is giving right Yeah, now. yeah, yeah, They will always they never criticize Modi for this. yeah. They only criticize Modi for this. One is he think they are communal, and Hmm. second thing is they don't want to fit themselves into a right wing. That's why sometimes they don't do that. Yeah. So I think they Basically, they're the MSNBC of India. yeah, they are MSNBC of India, right? Like NDTV now. I know what will Yeah. NDTV going to be in Hey, future. people have come, like, it's on one level, it is sad that someone like Ravish Kumar had to leave because he was at the Yeah, end of the day still on the right side. But yeah, there are people who have also pointed out that for a number of years, and NDTV's newsroom did not have as much, cross caste representation at it as it should have had, I and should have that had. for that it hardly ever gets called out. But yeah, yeah. Yeah. And one more thing, Vimo, I want to ask you, what's your take on that? I have seen people who are leftists and who are talking about marginalized people and Dalits. But Mhm. when I see the people who talk about it, like suppose if you see CPI party and Marxist Mhm. party, they are all upper caste people, right? Yeah, Most of that them is are. also that's Most of also the a criticism that has been. Yeah, yeah, I agree. I agree. Yeah, so the thing is, like, I don't know why it is so, but ultimately the people who are on power, I don't know why they are not letting the people, or they are not letting, or like they are not intentionally coming out. I don't know what is the reason. So, what do you think? So on that, at least, like, my position is that I recognize the problem that you're pointing at, but I am no wiser than you as for its reason. I think the best reason we can all point out is that because of caste hegemonies, upper castes planted themselves in these positions of power across the board. Right winger be Yeah. upper caste, liberal be upper caste, communist be upper caste, and Mm, now because some people, because they have their own internal squabbles, they make it about communalism or something or the other, but nobody is actually going to examine the problem on the caste level, and yeah. that is only something that is getting called for by the Dalit Bahujan Adivasi quarters. Yeah. Okay. Yeah. So that is one thing. It's good to know your take about it. And there's one more thing again. Can I ask? Okay, yeah, Yeah. this is your last thing. Okay, I have Yeah. like This three is my. people, four Yeah. This people is my waiting last. now.
Yeah, this is Hmm. my last thing. This is so I have a bunch of friends who work for corporates like IT crowd and all the IT Hmm. people and some other corporate. They are not owning that, but they are workers basically, right? Okay. But when I talk to them about their opinions on labor laws and how India is relating them, so Hmm. uh, uh, obviously they are with it, right? And they think that Hmm. they should be diverted for the so that investments come and everything happens, right? So the thing is, when I say them that since hey guys, listen, you are also a worker, and the facilities that you are enjoying today, like Hmm. 5-day week, Yeah. maternity options and everything, that you Yeah. are got this because of labor laws only, right? Yeah. So why do you want to weaken them? So I told them, you have this, uh, sense of insecurity or complexity, and you want to see yourself as one of those corporate people, but you are not. So you, by doing such, supporting such things, Hmm. you get this feeling, and that's why you are doing that. So I ended up in a big argument. Yeah. So This what's is your something did I I've point? written. Yeah, Yeah, I've written about this. Like, the software engineer is also a laborer. yeah, And he's the also a sooner he laborer. realizes that the people Yeah, who he considers laborers are his people, the better. yeah, Because otherwise, he'll continue being a slave to the corporate machinery and things will because never change. so this is basically PMC, like professional managerial class, right? We call them these people. This and Okay. basically this capitalists thrive on these people. Like they uses them, and because so this is what I'm still reading about it. So I thought I should Hmm. tell it to you and Hmm. see what's your take on that. Yeah. So that's it I from my have an side. essay on my blog. There is an essay called "We Are All Laborers." I think. Yeah, Okay. I wrote it about a year ago, and it kind Hmm. of broadly kind of goes into what you're talking about. Okay. Okay. Thanks, Vimoh. Thanks for giving me a Thanks, chance to Amber. speak to Thank you. you. Thank you. Thank That was Amber. There is okay. So there is Arjun, Vivi, Abhinav, and Bloodless Revolution. I'll take Vivi first and then Arjun because Arjun was there in the last episode. So hi Vivi. Hi, Vimoh. Can you hear me? Hello. Yes, I can hear you. Okay, okay. So I also discovered your channel recently, along with Okay. Science is Dope. Hmm. So my question is, you say you are an agnostic atheist, okay? Yes. So when you say you are agnostic atheist, you're saying that you don't know if God exists or not. Hmm. But according to me, don't you think the next position would be to find out the truth, whether God exists or not? Like, Sure. is, is that what I wanted to ask? Yeah. Sure. So you need to get out of that agnostic position, right? At some point of time, No, the it will agnostic be the position. atheist or 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 The agnostic. or a No. 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 religious. No. You're not understanding the whole thing. Agnostic Mhm. atheist means I don't know, and therefore I don't believe. My atheism stems from my agnosticism, and they are interrelated. I am not an agnostic only, I'm not an atheist only, I'm an agnostic atheist. It's a well recognized position that many people find Mhm. difficult to digest. I don't understand why. Yeah, yeah. But Because I'm but also agnostic, but I'm not agnostic atheist. so what are you agnostic about? Whether God exists or not. No, see the So word I agnostic feel. means the Mhm. word agnostic has to do with knowing or not knowing. People are agnostic about the flat earth. People are agnostic about the moon landings. So when you add atheist or theist after agnostic, you make clear that your agnosticism has to do with your position on whether you believe on God or not. So just Okay, so. agnostic, I don't Mhm. know what it means. Yeah, but when you say agnostic, so don't you think the next situation would be to find out the information, find the truth Yeah, about that thing? that's why I'm doing this show. Okay, so you're Whoever finding out thinks the truth. Okay. whoever thinks they know that God exists can come and Mhm. provide evidence. And if there is sufficient evidence, I'll say, okay, yeah, God exists. No, but won't you find it? That In was my what way? question. Are you trying to push me in a certain direction? In what way should I find out? I mean, I don't know because even when someone asked me whether you are, I also wanted to say that I'm an agnostic atheist. Hmm. But in that case, my friend tell me that you can either be religious or you can either be atheist or Hmm. you can be religious. You can't be agnostic atheist. Like uh, you See, need to.
I hardly ever have any patience for people who tell me what I should be or what I should not be. This is like a Mhm, religious person like someone has decided to hit me with a car, and I am standing on the sidewalk, so they can't hit me. mhm. So they're asking me to Okay. move to the middle of the road so they can easily run me over. It's not my job to make their life easier. I am standing on the Mhm, sidewalk mhm. because I am standing on the sidewalk. Deal with it, Okay, okay, okay. right? That's fine. That's fine. I just Hmm. wanted your opinion about that. Okay. And one more. I have one more question, and I want your Huh. opinion about Sure. the first thing that Amber said about Hmm. ideology. So, Hmm. is it necessary to have an ideology or a specific ideology, like a left wing, right wing, centrist, liberal? No. No. Because if you saw the interview of Prashant Kishore, the Hmm. news channel had interview with Prashant Kishore. He gave an Hmm. example of Gandhiji. Hmm. So he said that Gandhiji was against cow slaughter. So Hmm. someone may call him a right wing. Then Hmm. he also has friends with businessmen at that time. So Okay. someone can say him capitalist. So like many So here's examples. So he can be here's the any. thing. I don't necessarily agree with that because it sounds a little too generic. I said that you don't need to have an ideology, but that Mhm. does not mean that if you don't have an ideology, you're not political in any way. You're still going to end up being political in some way. Saying that cow slaughter is something wrong makes it political. It's a political decision to support something that is at least pseudo religious. uh, as far as being friends with businessmen is concerned, I'm pretty sure there are even communists who are friends with businessmen. Yeah, yeah. There is a difference between opposing capitalism as a system and opposing people who believe in capitalism. You can still oppose people who believe in capitalism, but you don't have to hate them. You don't have to. I don't even have any capitalist friends. That's not politics. That's just bizarre. But Okay, as far as I reiterate my point. It is it is probably possible to not have an ideology, but it is not possible to be not political. okay. Hmm. Yeah, that's it, Vimoh. Great. Thank you, These were the Vivi. only two questions. Yeah, thank you so Thank much. you. Bye. Bye bye. That was Vivi. Before I take on Arjun, let me read a few comments. Ainav says, sorry, I didn't get to comments earlier today. Ainav says, do you think a Savarna woman's privilege of being Savarna and the underprivilege of being a woman balance each other out? I suppose it will depend on the context. I suppose what kind of social behaviors are they having to endure? If they are enduring, if they are interacting with someone from a caste that is supposedly below them and they are getting advantage, then it's privilege. If they are interacting with someone as a woman and they are being subjugated because of their gender, then it's lack of privilege. A privilege only comes into play when we interact with each other on a social level. A static being does not have privilege, or it's only something that becomes visible when you're interacting with people. mm, Anonymous says न्यू ट्रांसफार्मर मूवी का ट्रेलर आया है. हाँ पता है, मैंने देखा, बट आई फाइंड माई सेल्फ इनकेपेबल ऑफ गेटिंग एक्साइटेड अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स एनी मोर. I don't know why. Maybe because of all the bad things. There was this Bumblebee movie in the middle, uh, not very much talked about. It was just It had Haley Steinfeld in it. I liked it. It was quite fun. Not too much, but एक time देखने लायक है. Um, Apurv says, is the criticism of Ravish for not speaking against caste discrimination valid? No, I never said Ravish does not speak against caste discrimination. The point that people are making about Ravish is resigning from NDTV was that NDTV newsroom did not have adequate representation of people from marginalized castes. Um, right. Apekshit says, Autobots, let's roll. Okay. So रॉबर्ट वुल्फस्टोन इज ऑल्सो इन द चैट, बट वो थोड़ा बाद में है. अभी अर्जुन को लेते हैं. हाय अर्जुन. हाँ नमस्ते। आज नमस्ते. दो पॉइंट पर हाँ आज दो दो पॉइंट पर बात करना थी। हम्म. एक तो जैसे मैं एब्स्ट्रैक्ट चीजों पर ज्यादा मैं फोकस मतलब बात करना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन सोचता बहुत हूँ। एब्स्ट्रैक्ट जो हम्म. चीजें होती है जैसे पुनर्जन्म है, इस पर हम्म. मैंने डिबेट भी करी है, और ठीक है. आत्मा है और ईश्वर है।
तो ओके। ईश्वर पर एक पहले मैं अपना एक आर्गुमेंट देना चाहता हूँ जो ईश्वर के अगेंस्ट है। एक मतलब एक डिजाइन आर्गुमेंट बहुत ज्यादा अभी मतलब सुनने में आता है कि डिजाइन ये एक परफेक्ट डिजाइन है ये दुनिया। तो इसके हम्म काफी तरह से इसको काउंटर किया जा सकता है, कई तरह से जैसे हम्म काउंटर एनालॉजी है। पर हम्म मेरा एक बहुत फेवरेट आर्गुमेंट ये है कि जैसे ये लोग कहते हैं कि ईश्वर जो है वो परफेक्ट डिजाइनर है, ठीक है। हम्म यानी ईश्वर से कोई गलती नहीं हो सकती, है हम्म। ना। हमसे गलती हो सकती है, हम घर बनाएंगे गलती हो सकती है, लेकिन अर्जुन, ईश्वर से गलती नहीं होती। और आपका ऑडियो थोड़ा हाँ फ्लक्चुएट कर रहा है। आप फोन के पास बैठ के ठीक है, बात कर मैं सकते हैं? आई थिंक यू वॉकिंग अराउंड, आर यू? ब्लूटूथ बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं, वो ब्लूटूथ चालू है इसलिए। नहीं नहीं, ब्लूटूथ मत करो, सीधे फोन पे ही हाँ बात अब करो। आ रही है ठीक से? एक और बार ट्राई करो, से समथिंग। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है, अब ठीक है, बताओ। हाँ अब आ रही है, ठीक है। आ रही है, बताओ। तो आज दो चीजों पर बात करना चाहता था। पहला तो हम्म एक ईश्वर पर बात करना चाहता था कि हम्म जो ईश्वर है उसके बारे में दो बातें ये लोग कहते हैं कि पहली चीज तो ईश्वर एक परफेक्ट डिजाइनर है और उसकी डिजाइन में कोई गलती नहीं हो सकती है। और दूसरी चीज ये लोग कहते हैं कि ईश्वर ने जीवों के लिए ये यूनिवर्स बनाया है, यानी कि बैक्टीरिया के लिए, हमारे लिए, गाय के लिए, सभी के लिए ये यूनिवर्स बनाया है। यानी हमारा अस्तित्व ना हो कॉन्शियस बीइंग का तो ये यूनिवर्स का कोई मतलब नहीं। तो अब इस पर ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर ईश्वर ने हमें हमें बनाया है, हमारे लिए दुनिया बनाई है, तो फिर दुनिया में भूकंप आते हैं, आंधी तूफान आते हैं और बिजली गिर जाती है, लोग मरते हैं। तो फिर ये कैसी रचना है? परफेक्ट डिजाइन की तो रचना नहीं है। अगर मैं अपने बच्चों के लिए घर बनाता हूँ तो मैं उसमें ऐसा घर तो नहीं बनाऊंगा ना कि वो गिर जाएगा। मैं घर ऐसा बनाऊंगा कि जो अच्छा होगा। अब गलती से बन सकता है लेकिन परफेक्ट डिजाइनर तो गलती भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि ये जो डिजाइन, ये यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो ईश्वर कहा जाता है, परफेक्ट डिजाइन कहा जाता है, ये अच्छी थ्योरी नहीं है। इसके अलावा एक दूसरी जो इवोल्यूशन की थ्योरी है वो बहुत अच्छी है। वो सर्वाइवल ओरिएंटेड है, यानी कि उसमें काम चल जाता है, सर्वाइव हो जाता है आदमी। जैसे ब्लाइंड स्पॉट है हमारी आंखों में, तो ये इवोल्यूशनरी डिजाइन है, ठीक है, जिसमें सर्वाइवल हो जाता है कि हमारे ब्लाइंड स्पॉट से हमें कोई सर्वाइवल का कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन अब ब्लाइंड स्पॉट क्यों हुए अगर ईश्वर ने बनाया है हमें? तो ये सवाल उठते हैं। तो ये परफेक्ट डिजाइन ये अच्छी थ्योरी नहीं है, ठीक है। अच्छा आपका सॉरी, मैं वॉइस नहीं आ म्यूट पे रहा। था। हाँ, मैं ये कह हाँ रहा था कि आर्ग्यूमेंट अच्छे हैं, बट जब आप किसी थीइस्ट से बात कर रहे होते हैं तो इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाँ वो हाँ लोग बोले कि जब आप बोलें कि क्रिएशन हाँ परफेक्ट नहीं है, तो वो बोलेंगे कि क्रिएशन परफेक्ट है। एक क्रिश्चियन थियोलॉजी में एक आइडिया है ऑप्टिमिज्म का, और वो ऑप्टिमिज्म मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना चीयरफुल होने वाला, ये वो ऑप्टिमिज्म नहीं है। एक ऑप्टिमिज्म होता है, उसका मतलब है दुनिया जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी है, हाँ इससे ज़्यादा अच्छा होना संभव ही नहीं था, इसीलिए दुनिया इससे अच्छी नहीं है। सो ये आर्ग्यूमेंट्स आपने तो जो दिए वो अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं, सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं, पर ये आर्ग्यूमेंट्स बहुत सालों से दिए जाते रहे हैं और उन्होंने इनका जवाब देने के तरीके भी ढूँढ लिए हैं। वो जवाब अच्छे हम्म, जवाब नहीं हैं, उसी प्रकार की खाना-पूरी वाले जवाब हैं। पर ये जो आर्ग्यूमेंट्स जब आप बोलेंगे तो आपको अगर इन आर्ग्यूमेंट्स को आगे बढ़ाना है, तो आपको हाँ एंटिसिपेट करना होगा कि वो लोग क्या बोलेंगे और फिर हाँ उसका जवाब देने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हाँ। मतलब जैसे मैंने एक से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये संघर्ष के लिए दिया है, यानी ये तूफान वगैरह इसलिए आते हैं ताकि हाँ, इंसान संघर्ष करे, आलसी ना बैठे। क्या हाँ। आर्ग्यूमेंट! ये तो हम आर्गुमेंट लोग बहुत बकवास है, क्योंकि जिस जिस बच्चे को पैदाइश के टाइम से कैंसर है, वो काहे का संघर्ष करेगा? हाँ, जो मतलब कोई जन्म ही नहीं लिया वो भी आंधी तूफान में मर जाते हैं। हाँ, तो इतना ये संघर्ष मतलब अगर संघर्ष गोल है, तो संघर्ष हाँ, होना चाहिए एक ऐसा संघर्ष जिसकी वजह से कोई यू नो को एक चांस हो उसको जीतने का। पर एक हम्म। अर्थक्वेक में एक 12 मंजिला इमारत गिर जाती है जिसके अंदर एक छोटा-सा बेबी था। वो काहे का संघर्ष करता और उसके पास क्या उपाय था उससे निकलने का? हाँ, तो हुँ। ये भी होल्ड नहीं करता है। वैसे आपने जो कहा था उसका भी आंसर मैं करने की कोशिश कर सकता हूँ, पर खैर छोड़िए, करिए, नहीं तो करिए, फिर ये करिए। करिए, करिए। अच्छा ठीक है। उसका मैं आंसर ये करूंगा कि अगर आप कहते हैं कि दुनिया ये इतनी ही बेहतर हो सकती है, इससे बेहतर ज्यादा नहीं हो सकती है, तो दुनिया में हुँ, प्रोग्रेस तो होती है, हम तो देखते हैं। हिटलर के जमाने में जो जर्मनी था उससे आज बहुत प्रोग्रेसिव है, ठीक है। और दैट्स अ हमारे गुड पास पॉइंट। तो हाँ, तो दैट्स अ गुड पॉइंट। प्रोग्रेस। यू कैन से आप इसको ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि अ, आज से 200-300 साल पहले
हाँ। लोग कुछ बीमारियों से मरते थे और उन बीमारियों का इलाज नहीं था, और तब अगर ये ऑप्टिमिज्म वाला आर्गुमेंट कोई देता तो कहता इस बीमारी का इलाज नहीं है क्योंकि इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, नहीं हो पर सकता। अब है। तो क्या वो व्यक्ति तब गलत था, या जो व्यक्ति ऑप्टिमिज्म वाले आर्गुमेंट का इस्तेमाल अब कर रहा है वो गलत है? दुनिया तो अच्छा, बेहतर अच्छा हो पॉइंट है। रही है, हाँ, आप कैसे कह सकते हैं कि इससे बेहतर नहीं हो सकता? तो ये तो हाँ, बेकार की बात है। हाँ। हाँ, अच्छा मैं दूसरे एक और अगर बात ये बाय द वे अगर हम मान भी लें ना, अगर हम मान लें कि चीज़ें इससे हाँ, बेहतर नहीं हो सकती, तो हम इनोवेशन करना ही छोड़ देंगे। हाँ, 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 ये बात भी है। हुँ। ये तो है। अच्छा एक दूसरी चीज़ पर मैं बात करना चाह रहा हाँ, था आपका कि दूसरा पॉइंट बताइए। हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग खुद को एथियस्ट कहते हैं, तो मुझे मैं मतलब वैसे मैं एथियस्ट हूँ, हुँ, एग्नोस्टिक है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं विज्ञानवादी, रैशनलिस्ट ऐसे शब्दों से मैं पॉपुलर हूँ ज़्यादा। मेरा हुँ, उद्देश्य ये है कि सामने वाला रैशनलिस्ट बने, ना कि क्योंकि एथियस्ट में तो फिर ऐसे लोग भी एथियस्ट होंगे जो ये कहेंगे कि चलो हम पैरासाइकोलॉजी में मानते हैं, साइंस भी मानते हैं, हुँ, पैरासाइकोलॉजी मानते हैं, लेकिन हुँ, हम गॉड को नहीं मानते, तो वो भी एथियस्ट में गिने जाएँगे। तो और जैसे बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, ये भी हुँ, एथियस्टिक है, ठीक है? हुँ, चारवाक भी एथियस्ट हुँ, लेकिन पर मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे अलग हूँ, मैं चारवाक से अलग हूँ, मैं बुद्धिज़्म से अलग हूँ, मैं हुँ, पैरासाइकोलॉजी वालों से अलग हूँ। तो मेरा एक अलग जो विचार मेरा ये होता है विज्ञानवादी होना और मेरा एक हुँ। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि यू कैन यू कैन नॉट नो मोर देन एकेडमिया। इफ यू नो मोर देन एकेडमिया देन पब्लिश इट। आप इसको या, रिसर्च में पब्लिश कीजिए। अगर आप या। हिस्ट्री में उससे ज़्यादा आप एक जानते चीज़ हैं नोट अकेडमी करेंगे, इनमें से हाँ, जितने भी नमूने होते हैं ना जो कहते हैं कि सारे साइंटिस्ट गलत हैं, उनको बोलो अच्छा तुमने साइंस पढ़ी है? नहीं। तुमने साइंटिफिक पेपर लिखा है? नहीं। किसी साइंटिस्ट से हाँ, बात की है, उनको समझाने की कोशिश की है तुम्हारा पॉइंट क्या है? नहीं। वो लोग चले आएँगे हाँ, लाइव स्ट्रीम पर बात करने के लिए। जैसे मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ। अरे भाई, हाँ, अगर तुम साइंटिस्ट हो, रिसर्च पेपर लिखो, नोबेल प्राइज़ जीत जाओ, मैं तुम्हारा बुला के इंटरव्यू लूँगा। बल्कि तुम तो शायद तब मुझे भाव भी नहीं दोगे। पर नहीं, तुमको वो हाँ। सब नहीं करना। तुमको अपना उल्लू सीधा करना है किसी लाइव स्ट्रीमर के चैनल पे आके ऐसी-ऐसी चीज़ों के बारे में बात करके, जिसके बारे में ना तुम्हें ठीक से पता है और ना मुझे ठीक से पता है। इससे क्या फ़ायदा हुँ। होता है? इसीलिए मैंने अपना बेसिक प्रिंसिपल ही ऐसा बनाया है कि जो जिसमें कोई अंधविश्वास की जगह ही ना है, ना पैरासाइकोलॉजी या किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की कोई हुँ, जगह ना हो कि एकेडमिया जो कह रही है, यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हो रही है, उसको हुँ, पढ़ो और उसको अगर आपको गलत लगता है तो फिर पब्लिश करो, उनको चैलेंज करो। ठीक है? हुँ। ये यूट्यूब पर आते हैं, बुक पब्लिश करते हैं, अपने ही पब्लिकेशन खोल लेते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। सही है। ठीक है, बस आज इतना ही। ठीक है अर्जुन, थैंक यू। ये थे अर्जुन। एथीस्ट 101 सेज़ आई हैव वन क्वेश्चन, ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? भगवान का आंसर मिल जाएगा पर इसका आंसर नहीं मिलेगा कभी। अम Dhruvin says, "What are your views on current Indian politics? I feel that Indian politics will be revolved around Hindutva at least next 10 years. I don't think there will be Congress or non-BJP government in 2024. I agree that it will revolve around Hindutva to a certain degree till for the next decade, possibly even more. But I also think that in 2024 there is a significant chance of the BJP losing. Also, I fear BJP will move further to extreme Hindutva politics with Hemanta Bishwa and Yogi making the central leadership in future. Right now, we are in the middle of the Gujarat election, and the kind of vitriol that we saw in the Delhi election and even the West Bengal election to a certain degree, it definitely has gone down. Like even the BJP to a certain degree is realizing that this alone will not work. So let's hope for the best. And if things take like हम लोग कहाँ जा रहे हैं? If things take a bad turn, we will be right here to suffer and to talk about it. Hmm. Prasad says, "Hi Vimoh, could you ask the people in short about the topic they wish to discuss about so that you could filter and prioritize this session?" Yeah, so जो लोग भी चैट में हो, अभी मैं अगला अभिनव को लेने वाला हूँ, but the remaining people go into the private chat and tell me what you want to talk about so I can prioritize it. That's a good point, Prasad. Thank you. Abhinav, go on. हेलो सर, क्या संस्कृत एक कंप्यूटर लैंग्वेज है? नहीं सर। अच्छा। हाँ, हाँ, और कुछ? नहीं बोलते हैं कि वो लोग कम शब्दों में ज्यादा कोड लिख सकता है, मतलब
इंफॉर्मेशन मैंने स्टोर कर सकते हैं। क्या तुमने आज तक कोई कंप्यूटर देखा है जो कि जिसमें संस्कृत में कोड एंटर किया गया हो? नहीं, फिर सूडो साइंस अभी वो सब तो यूट्यूब में देखेगा सर। क्या क्या? वो तो अभी ये सब तो क्लेम करता रहता है, तो हाँ, क्लेम का कोई वैल्यू नहीं होता। क्लेम के साथ एविडेंस होना चाहिए। अगर एविडेंस नहीं है तो किसी भी क्लेम को सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लेम तो कोई भी कर सकता है। ओके सर, थैंक यू। थैंक्स। बाय अभिनव। आई लाइक अभिनव। ही कम्स, मेक्स नो भूमिका, जस्ट आस्क्स हिज क्वेश्चंस एंड देन गोज। राइट, प्राइवेट चैट में देखते हैं। Yes, this is private chat, bloodless revolutionary. You can tell me here what you want to talk about, and I can then decide. But anyway, let me take on Robert Wolfstone. Hi, Robert. हेलो। Hello. हेलो। Yes, हेलो, go वॉइस on. आ I रहा can है hear सर? you. आ रहा है, ओके बताओ। ओके ओके। मैं तो अपना प्रीवियस वाला कुछ दो तीन बात है उनको ही रखना चाह रहा था। कौन सा वाला? सबसे पहले तो मैं उसके बाद। हेलो। हाँ, कौन सा वाला? हाँ हाँ हाँ, बता रहा हूँ ना। एक तो वो जो फिलोसफी वाला ज्ञानी था ना वो। नहीं, किसी और कॉलर के पॉइंट के बारे में बात मत करो। अपना पॉइंट रखना है तो रखो। नहीं तो ओके फिर क्या ओके होता है ओके। पता है? वो लोग बाद में आते हैं, मैं वहाँ नहीं था और तुम लोग मेरे पीठ पीछे बातें कर रहे थे और मुझे जवाब देने का मौका नहीं अच्छा। मिला। नहीं If नहीं you नहीं want to नहीं। talk about a मैं बस topic, उनका just talk उनका about the topic. Don't अ- refer to other people. अ- अरे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहा हूँ। हेलो। बताओ। मैं अपना अपना उसमें पॉइंट ऑफ, जैसे उस फिलोसफिकल बता रहे कि मतलब फिलोसफिकल कुछ भी कितना ही कोई बिजार चीज हो वो सही हो सकता है। हम्म पर लेकिन मेरा जो मानना है, जो ये दुनिया है वो लॉज ऑफ प्रिंसिपल्स पे चलती है। रॉबर्ट, अगर एक अपना पॉइंट सोसाइटी है वो अपना भी एक। वो फिलोसफी वाला पॉइंट किसी और का था, उसको रेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे बात कर लूँगा अगर कभी वो वापस आए। वैसे भी उन्होंने मुझे एक ओके मेल भेजा है जिसको मैंने अब तक पढ़ा नहीं है। बट तुम्हारा जो खुद का आर्गुमेंट है उसको रेज करो। ओके ओके, वही मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ तो जो जो सोसाइटी है वो जो है ना लॉज ऑफ प्रिंसिपल पे चलती है। इवन फिजिक्स भी लॉज ऑफ प्रिंसिपल पे चलती है। ये लॉज ऑफ यूनिवर्स भी प्रिंसिपल क्या होता जो है? वो प्रिंसिपल किसी भी तरह के लॉज हो सकते हैं। अच्छा, किसी भी एक या फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में जो चीजों को यूनिफाई या फिर उसको एक फॉर्म में रखते हैं। ठीक है सर। मुझे तो समझ जो में नहीं आ रहा उसका लॉज है मतलब ना, क्या है। लॉज का मतलब वही है एक तरह से जो मतलब क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स है। वो किसी नीति की तरह उस चीज को चलाते हैं। मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। लॉज हैं जो कि मतलब मैं ये कहना प्रिंसिपल्स चाह रहा हैं हूँ कि और जो कुछ चलाते हैं। आर यू टॉकिंग अबाउट फिजिकल लॉज और आर यू टॉकिंग अबाउट लॉज मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स? यस यस, मेड बाय ह्यूमन बींग्स। अच्छा, सो प्रिस्क्रिप्टिव लॉज। हाँ ओके। हाँ तो ओके। मैं यही कह रहा हूँ कि सर, तो मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा बिजार चीज है, कुछ भी कोई गलत करेगा तो वो आप थॉटफुल के लेवल पे आप कुछ भी बोल सकते हो, पर लेकिन जो ऑन द ग्राउंड जो है वो हम्म उसके ऊपर पनिशेबल सजा होती है। एज अ हम्म मर्डर आप किसी को मर मतलब आप मर्डर कर दोगे तो उसके हम्म ऊपर एक लॉ है, कानून है। तो गॉट इट। जो एक लॉ है उसके पीछे भी, तो हर हम्म चीज को जो है ना एक लॉ वो करता है डिफाइन कि मतलब उस अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी एक्शन कर रहे हो, तो उसके पीछे एक लॉ है। हम्म मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर। तो उसमें ओके, जैसे अब आप क्या हुआ सर? कुछ नहीं, मैंने कहा ओके। ओके ओके। हाँ तो सर मैं यही कह रहा था कि जो जो लॉज है ना वो मतलब डिस्क्रिप्टिव वही वही डिफाइन करते हैं। मैं सर एक तो कंफ्यूज हो जाता हूँ जब मैं माइक पे आता हूँ, वैसे दिमाग में तो बहुत कुछ चलता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डिड यू हैव एनी अदर पॉइंट हाँ टू मेक? हाँ, एक एक वही वही वाला पॉइंट था वो वेगन वाला। उसमें मैं अच्छा, ये नहीं, कहना चाहता वीगनिज्म के हूँ बारे में कि बात नहीं करना है, बात नहीं करना है आज। अरे हमारा जो स्पीशीज है ना सर, मेरे को सर अपना भाई, पॉइंट उसके ऑफ बारे व्यू। में बात नहीं करना है। अच्छा आपको नहीं करना? पिछली ठीक। बार बताया था ना, बात नहीं करना उसके बारे में। हाँ। नहीं बस मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो हमारा स्पीशीज है ना वो आज से कुछ बात नहीं पचास करना है हजार सर पहले उसके बारे में, मैंने एक बोल दिया था उसके बारे में बात नहीं करना है। अरे ना, चलो ठीक है, नहीं बोलता, मैं तो ही क्यों बोलता। ओके, चलो, कुछ और है? आपसे मेरा तो मैं कह रहा था मेरे तो चैनल का एक भी क्यों सब्सक्राइबर तो बढ़ा ही नहीं कुछ भी। अरे तुम देखो,
साइंस फिक्शन लिख के प्लेबॉय मैगजीन में मत भेजना। तुम्हारा चैनल चेस पे है, तुम यहाँ प्रमोट करोगे, कौन जाएगा? किसी चेस चैनल वाले पे जाके उनको बताओ ना कि मेरा चैनल चेस वाला है। हाँ, ये बात तो है आपका, पर लेकिन ऐसे हाँ, लाइव में तो कोई नहीं आता ना सर, नहीं लाइव से चेस बहुत लोग वाले जाएंगे चैनल। भी नहीं ना। ये भी डिपेंड करता है कि तुम्हें जो चैनल तुम प्रमोट कर रहे हो उस पे जो कंटेंट है वो किसके काम आएगा। उन लोगों के हाँ, काम ये आएगा, भी है। जिनके काम आएगा वो जहाँ पे नहीं, हैं मैं तो वहाँ जाके एंटरटेनमेंट प्रमोट करो ना। पर्पस के लिए, फन के लिए ही बनाता हूँ ज्यादा, मतलब। हाँ, पर यहाँ लोग एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते ना। जो लोग चेस, एंटरटेनमेंट बहुत वाइड सब्जेक्ट है। अगर तुमको अपना चेस चैनल प्रमोट करना है तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके करो जहाँ पे लोग चेस खेल रहे हैं, वो ज़्यादा हाँ, ये काम बात आएगा। भी है सर। हुँ, ठीक है, चलो। नहीं, पर लेकिन सर आपसे तो ऐसे बात होता रहता है, तो आप आपसे इजी है, पर लेकिन और अदर वो तो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, उनसे ऐसे हुँ, 1 to 1 लाइव में बात नहीं हो सकता है। जो हुँ। सुपर चैट में भी आई गेस वो पता नहीं क्या वो चेंज कर देते कि वो आप अपने वो वर्ड्स नहीं बोल सकते, सब्सक्राइबर, न्यू यूट्यूबर, XYZ अच्छा, अच्छा, हाँ। टाइप। नहीं वो इसलिए क्योंकि आप। उनके स्ट्रीम पे बहुत लोग आके वो सब करते होंगे ना, इसीलिए वो लोग हाँ। प्रिकॉशंस लेते हैं। चलो रॉबर्ट, ठीक है, मैं किसी और से बात करता हूँ। चलो, बाय-बाय। That was Robert. Before I proceed, I'll just like to thank Milind for the 200 rupee super chat. Milind, thank you very much. Milind says, hello Vimoh, keep going and growing. Viewers, kindly join the movement and support Vimoh. Yes, everyone support me. Support me. Hmm. Right. So the next person is Bloodless Revolutionary in Making. Hi. हाय विमो। अ, मैं आपको तब देखा था जब आपने एक बारी बताया था कि जो लेफ्ट विंग है उसमें Hmm. वो लोग साइलो में नहीं रहते हैं जैसे राइट विंग वाले रहते हैं। उन वो तो Hmm. 80% ऑफ द टाइम राइट विंग वालों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, उनको Echo डिबंक कर रहे chambers. होते हैं। हाँ. तो वो देख के मैं काफी काफी मोटिवेट हुआ था जब आपने बोला था। तो अच्छा. मेरे को बात करना था। अभी कोई आए थे आपके में लाइव स्ट्रीम Hmm. में अभी अभी, उन्होंने Hmm. कहा था कि सीपीआई में अपर कास्ट वाले ज्यादा होते हैं। तो हाँ. मतलब एक तरीके से जो हम लड़ रहे हैं मार्जिनलाइज लोगों के लिए वो Hmm. शायद सक्सेसफुल ना हो और होगा ही नहीं, ये ऐसा कुछ कहा Hmm. था उन्होंने। तो जो सीपीआई होता है और सीपीआई एम होता है, सीपीआई एमएल होता है, ये Hmm. इसलिए बनाया गया था क्योंकि इनमें बहुत डिफरेंस होता है। हाँ. पहली बात तो Hmm. जो सीपीआई एम है वो तो बिल्कुल ही मतलब अ, अभी अडानी के लिए उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, वो तो बिल्कुल ही बिट्रे कर चुके हैं लेबर के प्रोटेस्ट को। नहीं वो तो तो खैर प्रोलेटेरियट्स मैं उनकी प्रोटेस्ट। पार्टी आइडियोलॉजी या उनके पार्टी के एक्शंस के बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, सो मैं उसके ऊपर कमेंट करना अवॉइड करना चाहूँगा। इफ़ यू वांट टू मेक अ मोर हम्म। जनरल पॉइंट प्लीज़ गो अहेड। हाँ, वही जनरल पॉइंट ये है कि ना हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि कोई अपर कास्ट का है हुँ। तो वो मार्जिनलाइज लोगों के लिए नहीं लड़ सकता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी खुश नहीं है। क्योंकि हाँ, अगर नहीं, सी रात द को पॉइंट वो नहीं है, हम्म, पॉइंट ये है कि अगर मार्जिनलाइज़्ड लोगों के लिए कि मार्जिनलाइज़्ड लोगों की अधिकारों के लिए लड़ाई करनी है, तो वो लड़ाई बेहतर कौन लड़ेगा? मार्जिनलाइज़्ड लोग या उस कैटेगरी का कोई व्यक्ति जो कि मार्जिनलाइज़ जिसके एंसेस्टर्स कम से कम अगर वो व्यक्ति अच्छा भी है, तो वो व्यक्ति जिसके एंसेस्टर्स ने उस ऑपरेशन को क्रिएट किया था। इसका एक हम्म, सरल एग्ज़ाम्पल होगा अगर भारत की आज़ादी की लड़ाई कौन बेहतर लड़ेगा, भारतीय लोग या ब्रिटिशर्स? हम्म। हाँ, है ना? तो वो पॉइंट मेरे मन में क्लैरिटी है, ये जो आपने बोला है। हुँ, मैं इस पे बोल रहा हूँ कि जैसे भगत सिंह कहते थे ना कि 4 आने के लिए लड़ना चाहिए और जब समय आएगा तब 16 आने की भी बात करनी चाहिए। हुँ, तो तो जैसे अभी कौन ऑप्रेस कर रहा है, अभी अपर कास्ट ऑप्रेस कर रहा है। तो हुँ, पहले तो उनको अपने रिजर्वेशंस छोड़ने पड़ेंगे ना, मतलब अखबार पे हुँ। आता है कि हाँ, हाँ। शादी के लिए ये कास्ट होना जरूरी है, अपर कास्ट हुँ, होना जरूरी है, तो ऐसे होता है ना। तो हुँ, उन्हीं को तो अपना प्रिविलेज छोड़ना है। हुँ। और प्रिविलेज छोड़ना है, और ये भी है ना कि एक तरीके से हम थोड़ा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ नहीं बढ़ने लग जाते हैं कि अगर हम ये सोचेंगे, मतलब मेरे को कोई बुरा नहीं लगता आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, हुँ। लेकिन एक तरीके से टॉक्सिक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं हम अगर ऐसे बोलेंगे नहीं, एक कि आइडेंटिटी हम पॉलिटिक्स 2 हम्म, प्रकार की होती है ना, एक है वो हम्म, आइडेंटिटीज़ जो कि ऑप्रेसर्स की आइडेंटिटी है, जिनकी वजह से ऑप्रेसर्स को फ़ायदे मिलते हैं और दूसरी वो जिसको रिक्लेम किया गया है,
by the people who are oppressed. So this is a little like African American people reclaiming the black identity, because that identity was used to oppress them. So identity politics, just because someone is talking about their identity, does not automatically make it toxic. हाँ It becomes हाँ toxic depending on who is talking about it. पावरफुल लोगों हाँ की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यस टॉक्सिक होती है, दैट इज पावरलेस राइट लोगों की हाँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स टॉक्सिक नहीं होती है। नहीं होती है। तो नहीं। एक इसमें ये है कि फिर भी अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है हम्म तो उसमें जो मार्जिनलाइज कास्ट के जो लीडर बनते हैं वो हम्म आगे जाके सेम एक तरीके का कॉमन ग्राउंड हो जाता है उनका, जो पावर में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उनके साथ, और फिर वो उनकी हेल्प भी करते हैं, जैसे दिलीप मंडल है। हाँ, वो मैं समझ दिलीप सकता मंड हूँ। नहीं, हाँ नहीं, 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 मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप नाम मत हम्म, लीजिए। मैं कहता हूँ ठीक है। कि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उस चीज़ को एक्सक्यूज़ बनाएँगे, तो हम जो गोल है, जो कि है ऑप्रेस्ड लोगों को पॉलिटिकल पावर मिलनी चाहिए, उसके प्रति काम नहीं करेंगे। अगर सपोज़ लाइक आई डोंट नो व्हाट योर पोज़ीशन ऑन द कास्ट स्पेक्ट्रम इज़, आप सवर्ण बैकग्राउंड से हैं या दलित बहुजन आई एम आदिवासी फ्रॉम बैकग्राउंड से हैं? सवर्ण बैकग्राउंड। या सो मैं मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप सवर्ण हैं और मैं सवर्ण हूँ और हम लोग बैठ के यहाँ चिंता शिविर लगाएँगे कि दलित बहुजन आदिवासी लोगों के लिए बेहतर क्या है? अगर हम उनको पावर देंगे तो आगे चल के वो भी टॉक्सिक बन जाएँगे। बात की बात नहीं, है। ये नहीं कह अभी रहा का मैं। प्रॉब्लम ये है हाँ कि हम जैसे लोग सर, सारी पावर पकड़ के बैठे हैं। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो यही तो हमें इम्पावर करना है, उनको पॉलिटिकली इम्पावर करना है मार्जिनलाइज कास्ट को। हुँ, तो उसके लिए अगर हमें एक आना भी कहीं से मिल रहा है, मतलब कि जो लोग अपना प्रिविलेज छोड़ के ग्राउंड हुँ, पे आ रहे हैं और जो मार्जिनलाइज उनको बता रहे हैं कि कैसे उनके राइट्स छीने गए हैं और हुँ, उनको इन्वॉल्व करा रहे हैं, हुँ। तो ये तो होना ही चाहिए ना। मैंने और मैंने जो कभी भी मैंने मैंने हाँ, कभी भी नहीं कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम्म, ये सफिशिएंट नहीं है। हम्म, हाँ सफिशिएंट ऑफ कोर्स नहीं है, हर नेसेसरी किसी है को ना। हर किसी हाँ को इस प्रकार के एक्टिविज़्म में मतलब पार्ट लेना चाहिए। जो लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन हुआ है, उन्हें पावर मिलना ज़रूरी है। हम्म अगर उनको पावर देना हमारे हाथ में है, तो हमें देना चाहिए, और उनको पावर देने से पहले अगर आप और मैं बातें करें कि यार इनको पावर देंगे तो ये लोग पावर का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो भी एक तरह से कास्टिज़्म ही है ना? क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि वी आर बेटर एबल टू डू इट दैन देम। हम्म हम्म, हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप बोल रहे हो ना कि जो अपर कास्ट वाले हैं हुँ, वो अगर मार्जिनलाइज कास्ट के लड़ेंगे और वो लीडर बन रहे हैं, तो हुँ, एक तरीके से वही दिखाता है कि ये थोड़ा कास्टिस्ट बिहेवियर है, कि उन्हीं हाँ, को पता है भला क्या है उनके लिए, है एग्री, ना। या इसमें इसमें दिक्कत ये है ना कि इसके वजह से स्टार्टिंग नहीं हो पाती है, इसके वजह किस चीज़ से की? जैसे रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग नहीं हो पाती ना, अगर रिसोर्सेज जिसके पास ज्यादा हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, हाँ स्किप कर हाँ जाओ ये सब, मुझे सीधा बताओ तुमको क्या लगता है रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हो सकता है? रेवोल्यूशन, अच्छा, जब लोग एकजुट होते हैं और एक इशू को पकड़ते हैं और फिर उसके लिए संघर्ष करते हैं, संगठित होते हैं, नहीं, तो फिर से तब थोड़ा आता है। जेनेरिक जेनेरिक हो गया ना, हम लोग अभी भी हम्म ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर कैटेगरीज़ की बात कर रहे हैं। हम्म रेवोल्यूशन तब शुरू होगा जब तुम और मैं 2 सवर्ण लोग बैठ के बतियाएँगे कि रेवोल्यूशन शुरू करना है, या रेवोल्यूशन तब शुरू होगा जब हम ये एक्नॉलेज करें कि हमें पावर हैंडओवर करनी है उन लोगों को जिनके पास अब तक पावर नहीं थी। ये सेकंड वाला जो आपने कहा था, हाँ। बस मेरा पॉइंट वही है। हम लोग हम्म मतलब ये लोगों के उद्धार की बातें करना और लोगों हम्म के उद्धार के हेतु अपने पास जो पावर है उसको गिव अप करना, ये 2 अलग-अलग हम्म। बातें हैं। अच्छा, मैं इसलिए अपसेट हुआ आपने ये जो कहा है, क्योंकि इसके वजह से ना मेरे को काफी बारी जो ऑप्रेस्ड कास्ट से हैं, हुँ, उन्होंने, जैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ कॉलेज में, हुँ, तो मैं उनके पास जाता हूँ, मैं उनको बताता हुँ, हूँ कि ज्वाइन करना चाहिए, कैसे हुँ, कैसे मार दिया जाता है आपको, आपको जॉब नहीं दी जाती है जब आप किसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो वो हुँ, यूजुअली यही कहते हैं कि जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे सारे अपर कास्ट के हैं, जबकि ऐसा हुँ। है भी नहीं। ज्यादातर मार्जिनलाइज्ड कास्ट के ही ये ज्वाइन करते हैं मूवमेंट। सो देखो, पहली हाँ बात तो ये है कि मैं हाँ तुम्हें नहीं जानता हूँ। हम्म, दूसरी बात ये है कि अगर ये सच है कि तुम उनके पास जाते हो और उनसे कहते हो ऑर्गेनाइज़ेशन जॉइन करने वाले और वो नहीं करते हैं, कैन यू रियली ब्लेम देम?
they are suspicious. Maybe they are wrongly suspicious, but they are suspicious for a reason, right? हो सकता है उनके साथ ये पहले हो सकता है ये पहले हो चुका हो कि उन्होंने विश्वास किया हो किसी सवर्ण पर और उसने धोखा दे दिया हो, उसने सारी पावर अपने पास रख ली हो और उनके पास नहीं रही हो सकता है उन्होंने ये डिसाइड किया हो कि अ बेटर वे इज टू जस्ट कीप दीज पीपल आउट एंड जस्ट डू इट आवरसेल्व्स। सो अगर तुम सच में उनके साथ एंगेज करना चाहते हो, देन यू हैव टू फिगर आउट अ वे ऑफ गेटिंग पास्ट दिस सस्पिशन, एंड दैट कैन ओनली बी डन इफ यू डू थिंग्स द वे दे वांट। If you tell them, hey, I'm anti-caste, I'm also a savarna, come and join my organization, उससे वही होगा जो ये कांशी राम जी का नारा था ना, वोट हमारा सरकार तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये ऐसा कुछ था, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली। बट उनके साथ ये बहुत बार हो चुका है। कास्ट वगैरह को इशू बनाकर वोट मांगा जाता है और जब वोट मिल जाता है तो पावर में एक सवर्ण आदमी ही रहता है और कास्टिज्म चलता रहता है। So they are suspicious, sure. Who would not be suspicious in a situation like this? If you and I were oppressed, and अगर तुम और मैं स्वतंत्रता सेनानी होते, ठीक है, और एक अंग्रेज हमारे पास आता और बोलता कि हे हम भारत को आज़ाद कराना चाहता है, तुम हमारा ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाओ, तो हम उनका विश्वास करेंगे क्या? क्योंकि आज तक जितने जूते चप्पल हमने खाए हैं वो अंग्रेजों से ही खाए हैं, है ना? हम्म या सो दैट इज द ठीक पॉइंट। ठीक है। वैसे तो हम वो करते नहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि कितने मार्जिनलाइज कास्ट के आए हैं, कितने अपर कास्ट से आए हैं, बट यूजुअली हमको जॉइन मार्जिनलाइज कास्ट के लोग ही करते हैं। पर जिनमें हम पोटेंशियल देखते हैं वहीं ज्यादा पढ़ लिख के इधर उधर से सुन लेते हैं कुछ कुछ पॉलिटिशियन से, और उसके चक्कर में वो अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा होता है उसको ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि अच्छा, सस्पिशन आ जाता है उनको। मैं तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, ना ही मैं तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ। बट आई थिंक इफ आई वाज रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस में उन लोगों को लाने की जिनकी कैटेगरी के साथ ऑपरेशन हुआ है, और फिर इस बात को एडवर्टाइज कर दे कि और उन्हें बनने देना एम्बेसडर्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट अ थॉट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, आई डोंट नो यू, नोटेड। मे बी यू कैन वर्क ऑन दिस, बट आई विल हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन मैन। कैन आई? यस, एक और था पॉइंट वैसे। अच्छा बताओ, जल्दी से बताओ, 1 मिनट लो। कि कि अभी जैसे पहले के समय क्या होता था कि लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, तो और एक लेबर क्लास हुआ करती थी, तो हमें पता रहता था कि एनिमी कौन है, तो पूंजीपति के खिलाफ हम बहुत ही आसानी से लड़ सकते थे। अभी आज के समय क्या हुआ है कि जो जो अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके पास सारी मशीनरी है, जो पावर में है, ठीक है, उससे जिनको लड़ना है उनके पास एक ब्लूप्रिंट नहीं है कि अगर इनको हम रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा। तो क्या तब तक के लिए हम हर इशू को पकड़ पकड़ के इंडिविजुअली उसको अपोज करें, या नहीं, आई फिर एम श्योर ऐसी दे बात आर। नहीं है? अगर हाँ। अगर तुम पॉलिटिशियंस से बात करोगे जो कि इस प्रकार के काम में इन्वॉल्व हैं, वो ब्लूप्रिंट का रास्ता तुमको दिखा देंगे। आई एम प्रिटी श्योर देयर आर दलित, बहुजन, आदिवासी स्कॉलर्स हु हैव रिटन, देयर आर बुक्स रिटन अबाउट कास्टिज्म व्हिच शो द वे फॉरवर्ड, हाउ व्हाट यू कैन डू टू मेक थिंग्स बेटर। हाँ, मैं अभी कैपिटलिज्म के बारे में बात कर रहा था। अच्छा, तो हाँ। अच्छा तो नहीं, अगर तुम कैपिटलिज्म, एंटी कैपिटलिस्ट लिटरेचर की बात कर रहे हो, एक प्रोफेसर हैं रिचर्ड वुल्फ, उन्होंने एक हाँ, बुक लिखी रिचर्ड है डी वुल्फ। हाँ। डेमोक्रेसी इन द वर्क प्लेस के बारे में लिखा है, वर्कर कोऑपरेटिव्स के बारे में लिखा है, सोशलिस्ट देशों में रन किए जा रहे पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा है। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे वो रेगुलरली पॉडकास्ट डालते हैं, उसको देख सकते हो। ओके सर। कूल, चलो बाय। That was Bloodless Revolutionary. I'll just take a moment to thank Amit Tiwari. Hi Amit ji, बहुत दिन बाद, for the 449 rupee super sticker. Much appreciated, people. Anyone else who wants to support the channel, please use the super chat button. Anything you contribute helps me buy books, software, and pay bills, as I keep repeating. It's a good line. It's a good line. Private chat में किसी ने कुछ बोला है. Okay. So I have two people, Krishna and Sandarsh. I'll take Krishna first because they've been waiting for some time, and then I'll take Sandarsh. I hope that's okay, Sandarsh.
Just show me a thumbs up if you think that's okay. Okay, cool. Hi, Krishna. Hi, Vimoh. In one of your previous streams, you have said if pride comes from the oppressed backgrounds or marginal backgrounds, then that is okay. And If I what think comes? pride, like Pride. Okay. pride, yeah, pride Hmm. month from LGBT community. Hmm. I think that is completely true for LGBT community. Hmm. But I don't think, for suppose consider there is an XYZ named community that is marginalized in Indian. Hmm. So that a person from that community saying I am proud to be an XYZ community, I Hmm. don't think that is a really a good thing to do. Why? Because the No. caste thing is completely arbitrary है ना. लाइक हवा में बनाए गए हैं ना सवर्ण वालों ने कि हम ऊपर है तुम नीचे हैं. Hmm. तो Hmm. जो हवा में बनी बात को लेके कोई भी प्राउड फील करना सही नहीं लगता. इससे अच्छा कि हम सब एक बराबर है सवर्ण से हम कोई कमी नहीं है. ये बात बोलना सही लगता है मुझे. देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो डिफरेंस क्रिएट किया गया है, ये वो लोगों ने हम्म. नहीं क्रिएट किया जो कि ऑप्रेस्ड हैं, राइट? हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना Totally. सवर्ण वालों ने. So listen. There is another thing that happens called reclaiming an identity. एक आइडेंटिटी क्रिएट कर दी गई और वो आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा बैठ गई है सोसाइटी में. उसको आँख बंद कर देने से वो आइडेंटिटी गायब नहीं हो जाएगी. So नहीं what मैं people do sometimes, सुन हम्म, लो. So what हम्म, people do sometimes is that they reclaim a word. हम्म, जो अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, हम्म, उन्होंने जो एन वर्ड है, उसको रिक्लेम हम्म, कर लिया. ठीक है, तुमने ये वर्ड हमें इंसल्ट करने के लिए बनाया है. अब ये हाँ, वर्ड हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि तुम कभी भूल ना पाओ कि तुम ऑपरेसर हो. सो ये भी होता है. ये जो जो आइडेंटिटी ऑपरेसर क्रिएट करता है, कई बार हम्म, ऑप्रेस्ड उस आइडेंटिटी को वापस क्लेम कर लेते हैं. सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास 2 रास्ते हैं. या तो उस आइडेंटिटी को क्लेम करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ, या तो हम्म, आँख बंद करके प्रिटेंड करे कि वो एग्ज़िस्ट नहीं करती. और ऑप्रेसर सोसाइटी कभी उनको वो प्रिटेंड करने देगी नहीं. सो वो लोग दूसरा हम्म. रास्ता अपनाते हैं. इसीलिए हम वी हियर वर्ड्स लाइक गे प्राइड, दलित प्राइड, ब्लैक प्राइड एटसेट्रा. Okay, yeah, if that is the reason, yeah, maybe it's हुँ. I not completely agree, but I could say I partially No, no, agree to tell me your points. tell Hmm. me what you disagree with. Like it's still it doesn't it doesn't sound convincing to me, bro. That's it. Why? Like still, caste is an arbitrary concept, है ना? Caste is not arbitrary. It is artificial. It was created by upper caste people to dominate so-called lower caste people. Yeah, that's what I'm saying. ना? It is made artificially, ना? कोई physical Yeah. form तो नहीं So है ना उसका. आर्टिफिशियल और आर्बिट्ररी में फ़र्क होता है. आर्बिट्ररीली डिसाइडेड चीज़ें भी आर्टिफिशियल हो सकती हैं. अगर कोई चीज़ बनाई गई है किसी को नीचा दिखाने के लिए, और ये नीचा दिखाने का जो काम है, ये हज़ारों सालों से हो रहा है, तो हम्म, एक दिन अचानक जितने दलित लोग हैं सब अपनी आँखें बंद कर लेंगे तो वो कास्ट गायब नहीं हो जाएगा ना? नहीं होगा. हाँ, वैसे बहुत भी सही. वैसे भी अर्बन एरियाज़ में रहने वाले जो सवर्ण लोग हैं, वो हम्म. तो चाहते हैं कि लोग कास्ट के बारे में बात करना बंद कर दें ताकि वो सीक्रेटली कास्टिज़्म करते रहें. नहीं, Can you हम repeat लोग कहाँ again? कास्ट. सॉरी? Can you repeat it? Can you repeat again the last one? Urban वाले से वो चाहते हैं कि लोग कास्ट के बारे में बात ना करें, इसीलिए हाँ, वो उसके ऊपर सुंदर-सुंदर लेबल लगा के प्रिटेंड करते हैं जैसे कास्ट होता ही नहीं है. आपने कई बार सुना होगा, कोई कहता है इट्स नॉट कास्टिज़्म, इट्स वर्ण व्यवस्था. कोई okay. कहता है इट्स नॉट रिलिजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. ये जो Yeah, I have रीलेबलिंग heard का that. प्रोसेस है ना, या हम्म, रीलेबलिंग का इस्तेमाल किया जाता है किसी घटिया चीज़ को नॉर्मलाइज़ करने के लिए. और हम्म, पावरफुल लोगों के पास ये करने के बहुत सारे मौके होते हैं क्योंकि एज़ वी वर जस्ट डिस्कसिंग, मीडिया में रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है अपर कास्ट का. सो जो हम्म, नैरेटिव है कास्ट के बारे में, रिज़र्वेशन के बारे में, ये सब अपर कास्ट लोग ही पुश कर रहे हैं. अभी हम्म, साल 2022 खत्म होने वाला है. पिछले कुछ सालों में हमने बहुत ज़्यादा अपहीवल देखा है दलित, बहुजन, आदिवासी क्वार्टर्स में. वो अपनी बात को सामने रखने में ना सिर्फ सफल हो रहे हैं, बल्कि हम्म, इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से उनकी आवाज़ को बहुत वाइडली सुना जा रहा है. एंड दिस इज़ अ गुड हम्म, थिंग, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हेजेमनी ऑफ द अपर कास्ट एज़ फार एज़ मीडिया नैरेटिव्स इज़ कंसर्न्ड इज़ गोइंग डाउन. सो ये और ज़्यादा देखने को मिलेगा. बट एनीवे, आपका दूसरा पॉइंट क्या था? मेरा दूसरा पॉइंट ये कि राइटिंग को लेके है. हुँ, मैं साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ. सो हुँ,
जितने भी मैंने अपना दिमाग लगा क्रिएटिवली कुछ लिखा मेरी ज़िंदगी में, वो सब चीज़ साइंस के आस-पास से इर्द-गिर्द गिरता है और साथ ही साथ वो एकेडमिक्स को लेके हैं। लाइक ऐसा लिखा हूँ कि मेरे को मार्क्स अच्छे से मिले या कोई अप्रिसिएशन मिले। ऐसा नहीं लिखा हूँ कि कोई जनरल पॉपुलेशन को अच्छे से समझ पाए। सो जब भी मैं अब मेरे दोस्तों से कोई बात को लेकर आर्ग्यू करता हूँ, मैं फील किया कि मेरा बात समझ ही नहीं आता दोस्तों को जो मेरे जितने लाइक street friends, I could say, those who aren't studied as well as me. Okay. एंड यही चीज मैंने तूने भी एक लास्ट लाइक और पता नहीं कौन सी स्ट्रीम एक स्ट्रीम में कहा था कि नील डिग्रेसन का जो बात है लेट साइंस ब्रो जैसे होता है कि उतना साइंस वालों को ही कैटर करते हैं उनकी बात, नॉट फॉर द और लाइक कॉमन पीपल हु कैन अंडरस्टैंड. And my question is how people like me who are from science background can improve our skills to better communicate with the common audience. Okay, so your question is how can you improve your communication skills? In a way so that the regular audience who is not aware of the science can understand. See, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि I am a firm believer that clear writing comes from clear thinking. Neil deGrasse Tyson is able to explain things in great detail because he understands things in great detail. So I don't think that is going to be a problem for you because you already understand the concepts, right? Yeah. So what you can do is you can pick up a book about a topic about which you do know, right? And then see how that person has explained it. If you consume explanations or detailing of scientific concepts written by people who are better able to do it than you, maybe you will pick up some writing tips and tricks from them, and then you will be able to do it in your own writing. That's the best I can do. The rest is just practice. It's just practice. Write, show it to people, ask them if they understood. If they did not, ask them what they did not understand, and then work on that part. ओके. मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि मेरा एक दोस्त है और जो मैं रिलीजियस नहीं हूँ बट स्पिरिचुअल जैसा है, ठीक है. यू गेट व्हाट हिज थॉट्स आर. सो मैंने उसको साइंस डोप ने जो रिसेंटली वीडियो बनाया है ना लाइक ऑन बिग ब्रेन को, सो उस वीडियो को मैं दिखाया हूँ. तो उन्होंने बताया भाई वीडियो तो कोई मतलब पसंद ही नहीं है, बहुत बोरिंग लगा है, सिर्फ वो कुत्ते को के जो कहना वीर भाई सबसे बस वही पसंद आया और बाकी सब बातें बोरिंग लगा बोला है. तो ये सब बोरिंग लगा है तो जो स्पिरिचुअलिटी का सदगुरु या फिर गौर गोपाल दास का बात है उसको क्यों सुनते, वो भी तो बोरिंग होते. उन्होंने बोला कि किसी को अच्छा है बोलना, अच्छा रहने को बोलना क्यों बोरिंग लगता है भाई बोला. Like, I feel very weird. No, I think you are having an impact. जब भी कोई बोलता है ना हाँ ये तो बोरिंग है, मुझे लगता है that it's possible that they did not find it boring and they're only saying it so that you will stop sending it to them. So my advice would be keep sending it to them. Maybe openly कभी नहीं बोलेगा नहीं तो सही बोल रहा है, बट अगर करते रहोगे तो हो सकता है चांस है आने वाले कुछ महीनों में उसका माइंड बदलना शुरू हो जाए. So don't stop doing it. Okay. Like don't harass them obviously. Don't send them links every day. But जब भी हो सके politely एक भेज दो, hey I think this is interesting, you should watch it. बस. ठीक है. That's it. चलो bye. So there's another thing that happens. I'll just come to Sandarsh in a second, but I just want. Oh shit! What did I do? Sorry, Sandarsh, please come back. I accidentally removed you, I think. Another thing that happens is that if someone is not listening to a certain kind of thing, like suppose you have a friend of yours who is into really spiritual literature and all, and you find that whenever you send them pseudoscience busting videos, they don't watch it. Keep sending it to them, because when you do that, another thing will happen. If they do click on the video and they do watch it, the YouTube algorithm will show them more of it. So you may not even have to send them more all the time. You can send them one video or two videos or three videos, and if they watch even half of all of those, the YouTube algorithm will think that they are interested in the topic. So it might show them more videos of the same kind. यार मैंने गलती से संदर्श को हटा दिया. संदर्श प्लीज कम बैक. संदर्श प्लीज.
Wait, what was Sandarsh's points? He's back. He wants to talk about. Okay. Okay, cool. So let me take on Sandarsh. Right. He wants to talk about. Hello. Yeah. Okay. Am I audible? Okay, cool. Yes, I'm hearing my own voice. Okay. Yeah. Just a minute. Turn off Yeah. the live stream. Am I audible now? Yes, you're audible. Yeah. Right. Hi, Vimoh. Hi. I'm a huge. I mean, I got to know you through Pranav's channel, Science is Dope. Okay. It's been great enlightenment since I have gotten introduced to Science is Dope, as well as you. So I also was leaving some messages to Pranav every now and then. He uploads a video. I've also said about you in that message saying, Pranav, you give me at least, you give me a way to think how a person who believes or has learned science should think, and Vimoh makes me think as rationally as possible and as sanely as possible, right? I couldn't give that comment to you, and here I am giving that before me making my points, right? And I mean, this is my first time here. I don't know. I mean, I did listen to several of your live streams, but unfortunately, they were through Spotify later point of the time. Okay. So I don't know on live stream if there is a format that I have to follow or not. So I'm here. No, it's the same format. It's just you come, you talk, and we listen. Yeah. Don't worry about it. Go on, make your point. So yeah, as I have left the points that I want to speak already. So Vimoh, I am one of the non-believers, an atheist, and being an agnostic atheist is something that I got to. I mean, even the word agnostic is something that I had to Google after me knowing that you are an agnostic atheist, right? So then yes, that again makes sense. But I want to know, like, when atheist is, as what definition says, if that is what it is as a philosophy, are there any disagreement amongst the atheists that there are? And if yes, what are the common ones? See, atheist is a position on whether someone believes in God or not. Right. And I think unless someone is like ignorant about the meaning of words, they will all at least agree on the fact that they do not believe in God. Right. The part that comes before it, agnostic, atheist, gnostic, atheist, वगैरह, it depends on where their atheism comes from. Someone like me would say, I don't believe in God because I don't know anything about God. Someone who's a gnostic atheist might say, I know there is no God, and in which case we can have a disagreement about it. We did have a disagreement about something in the last episode and in another episode before that also. So atheism is not a worldview. A lot of people like to say that it is, but it is not a worldview. It is a single position on a single question, which is, does God exist? If you lack belief in the claim that God exists, you're an atheist. Simple. So that's it, I guess. Okay, got it. Understood. And one other thing, I mean, my parents also are non-believers. I mean, I'm not disclosing anything more than that, right? So non-believers, and also they have raised me being as right as possible, and that's why I suppose I'm a non-believer, right? So, but again, like when I was in my academics and when I was struggling a bit in academics, I mean, initially I somehow did good, but again, the graph went down, and when it was at a steep where it was something that might not get better if in at that stage, I believe I have heard my dad telling to me that I wish you were I wish you were a believer so that you would have had a fear in God at least. What are you afraid of now? Is it not something that is required? You seem to be not fearful of anything. My question is it necessary to be fearful for I mean, at that time, what I wanted to say to him is, why should I be fearful? I respect you guys, and why should I be fearful? Can you tell me what he was referring to? Like, in what context did he think Like, that you did I mean, not have yeah. fear? So what he meant, or at least what he thought of saying is, if you had that fear in God, you would have followed few things that might have inculcated some discipline to you, and that might have made you feel like, yes, I should study, and probably you would have gotten a reason why you should. I mean, I know even for himself, it might not have made sense after he's saying it, but that was a point made that irks me even now.
Yeah, Yeah. but it seems like something a dad would say to a son and half jokingly, etc. Mhm. So I don't know how seriously even he would have taken it, because there are religious Yeah. people who don't fear anything, right? And there are Yeah. religious people, there are atheists who Mhm. are quite afraid of a lot of things. So Okay. fear isn't really the differentiating factor here. But I find it Right. funny that your dad said that. Yeah, it did happen, and I believe he's also not very. He's not also a huge fan of that moment. He might have repented saying that. I believe that. Right? Yeah. I mean, not taking much of your time. There is one last thing I want to know. Hmm. So, I mean, when there are so many pseudoscience promoters who say, I mean, when I say promoters, what I mean is Hmm. when they say like Hinduism already knew several things which we are just getting to know now, Yeah. such, yes, exactly your reaction. That's what even I feel like, right? So when that happens, of course, they would say you should get into it. You should understand. To understand first, you should believe. Hmm. Once you believe, then you get probably exposed to such arguments, and then you would look into it. What they usually say, or I have personally heard, is you can't possibly be privileged to such resources that tells you about it, or maybe you're not intellect enough to understand even if such resources are there in your hands. Hmm. What do I say to them? Because of course I do like reading, but I have not been a vivid reader. I'm not a voracious reader. What do I say Hmm. to them? Belief is not a pathway to knowledge. If you Right. believe, you will not Mhm. know. You will just believe. Right. No, No, like no, no. if you like, for example, mm, this is a wallet, right? Mhm. Right. I know this is a wallet. Therefore, I believe this is a wallet. Right. If I believe that this is a wallet, I'll be Mhm. an idiot because it's not a wallet, right? True. True. So Yeah. you belief is not a, like, this is, I'm like paraphrasing Matt Dillahunty here. Belief is not a surefire way of arriving at knowledge. Uh, Mhm. if someone had a scooter Mhm. and you start the scooter in the morning, some days it starts, some days it doesn't start, right? Right. Is the Yep. scooter a reliable method to get to the office? No. If the Yeah. scooter starts always, then it's a reliable method, right? Right. Reliable. Right. Now, it is possible that you will believe something without knowing it, and the thing turns out to be true, Mhm. right? But belief Right. is still not a reliable method. It's a broken scooter. True. True. You did not arrive at knowledge using Mhm. means like evidence, observation, etc. So, Mhm. believing in random shit is neither here nor there. Anyone can believe anything, and if it turns out to be true, they say, "See, I always believed." It didn't. You didn't arrive at knowledge through the proper means. You guessed, and somehow that guess turned out to be true. And in most cases, that guess doesn't even turn out to be true. Right. Yep. Right. So yeah, I mean, yes, that's right. What I was probably making more of a point is when I ask them, what is the evidence, or is there anything that Hmm. actually makes me go through and try to see if there is, if that makes any sense or not? Is there anything of that kind? Is something that I ask. Then they say, you possibly can't be. I mean, they, what they say is, you possibly can't be privileged to have those resources handy, even if they Hmm. get into your hand. Highly unlikely that you would understand what it is. Then you would again say that no, this is all bullshit. I mean, excuse me See, if I I use. what I usually do, like, there are two methods. First is I ask them, "Do you understand it?" And they Mhm. usually say no, Mhm. because they have just heard it from someone else and they're repeating it. And if you Right. don't understand it, how do you know that is the way to understand it? Because all you're doing is just repeating what someone else told you. And Mhm. secondly, you can also tell them that you can't just turn on belief like a button, like a switch, right? If that Right. were possible, here I will tell you that I want to sell the Howrah Bridge to you. Believe me. Can you believe me? Like, No. it's not a switch, right? We believe things that we know. And when we don't have knowledge and we believe, we are engaging in stupidity. So Right. if someone says you believe you will know, you give them something to believe. Try Right. believing this. If they say I Got it. can't believe that, say, why can't you believe? Because you don't have knowledge. Unless you Right. have knowledge, how will you have belief? Belief cannot exist in a vacuum. True. True. Right. I think that's all, Vimo. That's all for now. And of course, I want to make Yeah, yeah. this a habit and try to come at least once out of those two live streams that you have. You're most I'll try welcome. You're to. most welcome.
Most Yeah. welcome. Maybe And I'll sorry for no, maybe accidentally I'll be, removing you earlier today. no, it's okay, it's okay. Maybe I'll be fearful of this at least. Following the routine, I mean. Yeah, I'm sure twice your a dad week. will be very happy. Probably, yeah. I'll let him know as well. Thanks, Vimoh. Thank you so Chalo. much. Bye. Streams are going really great. Thank you so much for letting me Chalo. in. Bye bye. Bye. Yeah. Um, Apekshit asks how to convince parents that Ayurveda is not scientific medicine. I showed them some videos, but they still don't listen. Keep showing them videos. That's all you can do. You can't force people to think a certain way. All you can do is provide them with evidence and hope that they see what it shows. The rest is, it's a matter of algorithmic frequency with which they get exposed to such information. Awara Billa is on the queue and he's the last person after which the live stream will end. So, what I'm going to do is that I'll go remove the pinned comment in the few seconds that I'm doing it. If someone accidentally clicks it and comes, I don't know how I will remove them. Let me just uh, remove it. And it is removed. Right. So, Awara Billa is the only person left. प्राइवेट चैट में कोई है? ओके, कोई नहीं है. आवारा बिल्ला, यू आर ऑन स्क्रीन. हेलो, हाय हाय विमो, हाय. आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है. So, like a week ago, there was a discussion on your channel about the surnames with respect to caste. Like person was asking, like, okay, what I will remove my caste surname, but what about those, like, जो is it okay to if I talk in Hindi, like you? हाँ, absolutely, go on. But try to So avoid अगर talking about the person and focus on the no, argument. yes, I just Hmm. wanted to mention about the topic. I neither Hmm. like ठीक है, मतलब तो मेरा उसका ये क्वेश्चन था कि लाइक बेसिकली कि जो लोअर कास्ट के पीपल उनको भी अपना कास्ट सरनेम मतलब हटा देना चाहिए बेसिकली. So here is my point, and I would like to know your point of view on it too. Hmm. That if we see today's situation after 70 years of independence of the country, quote unquote, Hmm. and here we are with so many policies and ऐसे things to remove caste from the our society. We Hmm. still the percentage of the people in the upper caste, or we say the percentage of Savarna people who Hmm. really understand what caste is and how it plays a role in our life. How many people have actually like not removed their surname but actually Hmm. accepted that caste is a role which plays in our like हम लोग स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तुम्हारे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, तो लोग बस मेरिट वाली पॉइंट को लेके बैठ जाते हैं, बट वो Hmm. नहीं देखते कि घर में माहौल कैसा है, हमारा नेटवर्क कैसा है. Hmm. Even if that person is a Savarna but Hmm. like they belong to the EWS category, उनके घर Hmm. में ऐसे नेटवर्क होते हैं कि लाइक एक मामा आपके यूएस में है, एक कहीं कहाँ का है, एक कहीं का है. I don't want to go into specifics, Yeah. but the thing is कि आज हम लोग and you can see that many of the Bahujan people are still removing their caste surname, like they use Bodh or Gautam, Hmm. like Yeah. based on और अम्बेडकर, सूरज कुमार बौद्ध, Hmm. सूरज कुमार बौद्ध और ऐसे लोग हैं जो Yeah. मतलब कास्ट नेम हटा रहे हैं, And there are people who अम्बेडकर even like, लगाते हैं गौतम. I think किसी ने शशि थरूर की अभी एक किताब आई है ना अम्बेडकर के ऊपर, उसमें उन्होंने कुछ हाँ, लोगों को कोट किया है और उनमें से एक ने ट्विटर पे शशि थरूर को मैसेज भेजा था कि आपने अपनी किताब दलित में रैपर, लिखा है यस, कि मुझे दलित रैपर. मुझे दलित लिखा है पर मैं बौद्ध हूँ. एंड शशि थरूर देन करेक्टेड हिमसेल्फ. Exactly. So it was about a rapper या. whom Shashi Tharoor quoted as a Dalit rapper. So हम्म. the thing is, आज अगर हम लोग we are in the process, the Bahujan people, of removing our caste surnames, but हम्म. even अगर हम लोग एक hypothetical situation में so मान भी लेते हैं कि all हम्म. the Bahujan people have removed their caste surname so that no one can identify them, then what about the upper caste or the Savarna people? Because अगर हम इसमें देखें तो 1% से भी कम लोग हैं जो हम्म. एक्चुअल में कास्ट को एग्री भी करते हैं. हम्म. बिकॉज जब भी कास्ट के बारे में बात होती है कोई ये नहीं पूछता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एवरीवन टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन. हम्म. तो आज 70 साल के बाद भी, और क्योंकि कास्ट को इन माय और सिर्फ ओपिनियन यूज नहीं करते, उसको डिफेंड करते हैं, कहते हैं कि ऑपरेसिव नहीं है, कहते हैं कि ये कास्ट का है, ये तो वर्ण व्यवस्था है और इट वाज नेवर मेंट टू बी बैड एटसेट्रा. 50 तरह के डिफेंसेस रेडी करके रखते हैं इस सब को दे यूज द जस्टिफाई वर्ड करने प्ले के लिए. ऑफ वर्ना इन कास्ट. आई या मीन या सीरियसली कास्ट इज इंग्लिश वर्ड फॉर जाति, बट दे या से कास्ट बाहर से आए, ऑल दैट. कुछ कहते सो हैं कि माय पॉइंट कास्ट इज स्पेनिश वर्ड है, कुछ कहते हैं कि अंग्रेज लेके आए थे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं.
I guess people who actually have knowledge about it can defend, because पहले मैं भी था, like मेरे को actually पता नहीं था जाति and वर्ण बीच में difference क्या होता है. So it is really hard to defend, argue about their whataboutism. So my thing is, in my opinion, and you tell me is it right or wrong, caste को आज हटाना हमारी society से काफी hard, because caste एक हिंदुइज्म का काफी internal part है. So caste को हटाना मतलब कि हिंदुइज्म को basically हटाना. That is like, this is my opinion. That will take like hundreds of years, in my opinion. So the thing about surname clears out कि surname हटाने या लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Surname हटा के आप अपना privilege आई नहीं ले एग्री, लोगे, आई surname एग्री। हटा के पिछले या लगा हफ्ते, के privilege ले नहीं लोगे. हाँ पिछले Yeah. हफ्ते जो जो आए थे जिन्होंने ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया था, मैंने उनसे भी यही कहा था कि लाइक आई एग्री विथ व्हाट यू सेड। वह जब तुमने कहा कि ये जाएगा नहीं कई सालों तक, और इस लाइक ये क्या है पता है, ये है एक आग जो कि जल रही है और हमारे पास इसको कंप्लीटली बुझाने के लिए सफिशिएंट पानी नहीं है। ऊपर से कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं तो मैं तो आग को नहीं मानता, पर चुपके चुपके उसके अंदर माचिस फेंकते रहते हैं और तेल डालते रहते हैं। तो हमारे पास अभी जो मीन्स है जैसे रिजर्वेशन या फिर गिविंग बेटर रिप्रेजेंटेशन टू पीपल फ्रॉम सो कॉल्ड बैकवर्ड कैटेगरीज, हमें उसके ऊपर डटे रहना होगा, हमें उसको और ज़्यादा फ्यूल देना होगा, ताकि अगर आग को हम मिटा नहीं पाए, कम से कम हम उसको ग्रो करने से रोक सकें। और अगर ये करने में हम लोग सफल रहे, तो जो अवेयरनेस इसके साथ ही साथ बिल्ड हो रही है, मे बी इन सम टाइम इट विल बी एनफ टू वाइप द थिंग आउट। Yeah, I mean, that's not something I think about, because it's not my responsibility. The या best, in my opinion, anti-caste or Bahujan people can do, I'm not saying only Bahujan, anti-caste people too, is to like actual spread awareness and help the Bahujan people out. Because we can't, बार बार हम नहीं कह सकते हैं अब सवर्णा लोगों के भैया कि तुम्हारे पास प्रिविलेज है. They would say मेरे पास प्रिविलेज नहीं है तो मेरे पापा ने कमाया था, like many YouTubers apparently say. But yeah, that's the thing. हाँ, नहीं, प्रिविलेज तो है उनके पास, नहीं वो प्रिविलेज तो उसको है वो राइट। वो क्या कहते प्रिविलेज है, हैं? वो उसको कह देते कि भाई वो कास्ट प्रिविलेज नहीं है, वो तो हमारे पापा ने कमाया था. बट देन आई हाँ, तो पॉइंट वो आउट भी कि आपके कास्ट पापा प्रिविलेज के हुआ आपके ना। आपके परदादा के टाइम पे, उस टाइम पे बहुजन लोगों को क्या कहते हैं, नहीं प्रॉपर्टी नहीं, रखने की कोई. आई थिंक अ लॉट ऑफ देम आर ऑब्लिवियस टू द फैक्ट दैट जो उनके पापा ने कमाया था वो भी कास्ट प्रिविलेज था, और जो उनके पास अभी है वो भी कास्ट प्रिविलेज ही है। जब ये लोग नौकरी मांगने जाते हैं कहीं, तो उनका सेकंड नेम, उनको लगता है सेकंड नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? आई मीन सो यार, ये इट्स वेरी ऐसा हार्ड टू. ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि 300 साल पहले थी और अब खत्म हो गई है। अभी भी है, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हाईएस्ट ऑफिसेस में अभी भी अपर कास्ट का डोमिनेंस है। एकदम यस. ये अचानक मैजिकली तो हो नहीं गया। आप किसी मैं कुछ दिनों पहले कॉमेडियंस की बात कर रहा था, जैसे कुछ कॉमेडियंस ने कुछ कास्टिस्ट जोक्स मारे थे वगैरह वगैरह। मेरा पॉइंट ये था कि ये एक्सीडेंटल नहीं है कि जब 4 कॉमेडियन खड़े होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, उनमें तुमको एक भी दलित, बहुजन, आदिवासी वॉइस नहीं मिलती है। ये एक्सीडेंटल नहीं है। मतलब ये, अगर कोई कॉमेडियन सच में चाहता है अपने पोजीशन को इवैल्यूएट करना, तो उसको अपने फ्रेंड सर्कल में देखना चाहिए, और उसमें देखना चाहिए कि इसके अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे सोशियो पॉलिटिकल, कल्चरल, कास्ट, रिलीजियस बैकग्राउंड से नहीं हैं। पर होते हैं, वही यस. होते हैं। हर उनके ग्रुप्स उन्हीं के जैसे लोगों से भरे होते हैं, और अगर उनको इस हेजेमनी को तोड़ना है तो उनको कोशिश करके रीच आउट करना होगा उन ग्रुप्स की तरफ जो कि उनके ग्रुप में नहीं है। और ये सबसे पहले सबसे पहले लोग अगर यही रिकॉग्नाइज कर लें कि उनकी पोजीशन क्या है, तो वो एक फर्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि तभी That's उनको the पता first चलेगा step. कि This is the step दूसरी many पोजीशन क्या है। Savarna people don't take. या Yes, this is the first step they don't take. अगर They think अगर that एक पावर yes, स्ट्रक्चर है और तुम एक कॉमेडियन हो और तुमसे कहा जा रहा है कि पंच अप डोंट पंच डाउन, तुम्हें अगर ये पता नहीं होगा कि तुम कहाँ खड़े हो, तो तुमको अप और डाउन का पता क्या चलेगा? exactly. तुम डाउन पंच करोगे और तुमको लग रहा होगा कि तुम अप पंच कर रहे हो। And ये आजकल एक और भी कहते हैं कि like the top people in the backward class, like there is an argument against affirmative action, that affirmative action, that is reservation in India's case, only helps the privileged people in the non-privileged category, or the privileged people, like जो SC community में जो 1 या 2% है जो आज एक अच्छी पोजीशन पे है सोसाइटी में, केवल उनको हेल्प करते हैं. So it is very hard in my opinion. मैं ऐसा जोक करता हूँ कि लाइक एक सवर्णा पीपल को पूरा अच्छे से समझाने को, इससे अच्छा मैं 10 लोगों की हेल्प कर दूं कि लाइक क्या वगैरह. बट हाँ, इट्स वेरी हार्ड टू बी, इन माय उसमें कम ओपिनियन. टाइम लगेगा, क्योंकि या
एक और चीज़ ये भी कर सकते हो ना कि अगर कोई कहता है कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट कर सकते हैं कि कास्ट सिस्टम से बड़ा रिजर्वेशन सिस्टम आज तक ना हुआ है, ना होगा, हम्म। राइट? Yes. क्योंकि ये रिजर्वेशन ही तो है कि ये प्रोफ़ेशंस इनके लिए रिज़र्व्ड हैं, ये प्रोफ़ेशंस इनके लिए रिज़र्व्ड हैं। अगर ये सिस्टम हज़ारों सालों से चल रहा है और इस सिस्टम को करेक्ट करने के लिए कोई चीज़ आई है, तो वो तो ख़ैर वो मतलब तो तुम ये कह कैसे सकते हो कि मुझे रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है अगर तुम कास्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो? Yes, completely agree. So yeah, that was my point. I have a one like एक और क्वेश्चन नहीं था, एक आपके लिए सजेशन था, एक वीडियो के लिए। हुँ, मैंने एक बार पहले भी कहा था ये चीज कि हुँ, आपने लाइक जो भगवत गीता है एंड ऑल द रिलीजियस टेक्स्ट आपने पढ़ रखे हैं, सो यू नो जब व्हेन समवन सेज कि नहीं नहीं भगवत गीता में ये नहीं लिखा है और नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, इट इज बेस्ड ऑन कर्मा। आई हुँ, वुड लाइक मैं ये बस बोलना चाहूंगा कि आप एक ऐसा वीडियो बनाएं जहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करें, like not for them, not for हुँ, the people who don't think that caste is a thing, for us कि हम लोग वहां से साइड कर सके कि भाई ये देख भगवत गीता के इस चैप्टर के इस चैप्टर के इस आपके श्लोक में लिखा है कि इट इज बेस्ड ऑन बर्थ एंड ऑल दैट, so it would हुँ, be easy because I don't really want to waste my time on reading such अच्छा। books. बाय द वे अगर मैं सजेस्ट कर सकूँ, आपको ये चैनल पता है ह्यूमन विद साइंस? Yeah, yes, yes, yes. तो उनका अभी I एक haven't रीसेंट seen वीडियो them. आया था। हाँ, उनका एक अभी एक रीसेंट वीडियो था, मतलब वो तो करते हैं मतलब लंबे-लंबे लाइव स्ट्रीम करते हैं, 8-8 घंटे के लाइव स्ट्रीम करते हैं। उनका अभी एक रीसेंट एपिसोड था भगवद गीता के ऊपर। इफ यू वांट यू कैन गो वॉच इट। लाइक दे गो उनके चैनल का ये है कि वो बहुत डिटेल में जाते हैं और बहुत लोगों से बात Okay. करते हैं एक-एक लाइव स्ट्रीम में। तो उसको देख सकते हो एंड आई विल आल्सो कीप द सजेशन इन माइंड। Yes, thanks क्योंकि that is something I struggle with. ओके, Yes, कूल, thank नोटेड। that is it. थैंक्स मैन, Bye. थैंक यू, बाय-बाय। So that was the last guest of today. And with that, we come to the end of today's episode. Let me take a look at a few uh, comments. Manoj says, you mentioned Richard Wolff. He mentioned about capitalism and democracy don't go together. But someone can say how he can discussing about capitalism on YouTube, how to counter this argument. Or kya karega? The sad truth is that we all live inside a capitalist world. If you are on an island of people where everyone is holding spears and trying to kill you. In order to protect yourself, you pick up a spear and then you say, we must all give up spears. And then one of them says, why are you holding a spear? अबे साले मैं spear नहीं पकड़ूंगा तो तुम मुझे मार डालोगे. When you are inside a system where only one kind of behavior works, you have no choice. Is it possible for people to, not be on YouTube and talk about it? नहीं ना. There is a reason when you talk to people about a certain thing being bad, you have to go where those people are. If you want to spread atheism, you go to the place where there are no atheists. नहीं तो atheism के atheist के बीच में spread करोगे. So yeah, I mean YouTube is a corporate product, but people are also doing podcasts, right? People are also using independent protocols like newsletters and RSS feeds, etc. They're not part of the corporate machinery. People use those also. And whatever means it is possible to use to spread your message, one should use. Naito, like the people who say that why are you on YouTube if you're opposed to corporations? They want you to shut up. That's why they're using your situation against you. That's it. Hmm. Ravi Ranjan says, how can someone believe there is a God if everything around us we know because of science research discovery? Alright, they will find a way. They always find a way. It's called God of the Gaps, and it's a very simple thing, but you will find manifestations of it all over the place. यहाँ गैप मिला ठूंस दिया, वहाँ गैप मिला ठूंस दिया. Wherever they find a gap, they will keep ठूंसing it. Back in the day, they used to ठूंस it in places where they can no longer ठूंस it in. Now they ठूंस it in genetic code. Intelligent design is apparently a thing. Creationism is thriving, mostly in America, but also in Australia. But yeah, these things happen. And the thing to remember is that whenever you ask how can they believe in God, the answer to that question is that they will find a way. And if you want them to not believe it that way, you will have to talk to them.
which is what I try to do here. Curious Joe says, human with science has quoted exact number of the shloka in Bhagavad Gita which reeks of casteism. Yes. Please go watch that video. But anyway, let me just remind everyone that the channel is monetized and that if anyone wants to support this YouTube channel, in addition, you can support me on Patreon. The URL is on screen, patreon.com/Vimoh. You can become a monthly member or an annual member. If you don't want to do that, you can make a one-time contribution by visiting vimoh.stck.me, which is my blog. There is a support button there. You can click on it and contribute any amount of your choice. Any amount of your choice, anything you send helps me buy books, buy software, and pay my bills. This is my job. This is my full-time occupation now, this podcast. And I thank you in advance for whatever you want to send. सेल इसलिए बोला क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ टी-शर्ट्स, हुडीज और मग्स. You can buy them at kadakmerch.com/VimohLive. That's kadakmerch.com/VimohLive. There's a t-shirt that says Sabka Malik fake hai. There's a t-shirt that says Woke Sabha is in session. So feel free. If you want to buy any, you can. And until next time, let me see if there are any other comments. No, there aren't. Until next time, please take care of yourself and people who are around you. And I will see you on Wednesday at 9:30 p.m. Until then, have a nice time. Be good, be safe. Bye.